Hello, well students, welcome back. Now students, properties of inverse trigonometric functions. देखिए इन प्रॉपर्टीज में होता क्या है कि इससे पहले कहा गया था whenever 30% syllabus reduced by the government by CBSE board, then student properties of inverse trigonometric functions are not in this syllabus. But this year, some questions related to properties of inverse trigonometric functions given. Students, I am telling you, these properties of inverse trigonometric functions very important for for competitive exam and for differentiation. For differentiation, properties of inverse trigonometric functions are very important. Now, student, I want to tell you some properties I am writing here. Properties of inverse trigonometric functions. I am writing here properties of inverse trigonometric functions. These properties are very important. Student, property 1 एंड स्टूडेंट्स जब भी कोई प्रॉपर्टी आप लिखें तो उसमें बहुत ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी की जो कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि व्हाट आर दीज थिंग्स. देखिए सबसे पहले क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स. एंड हियर स्टूडेंट कंडीशंस अप्लाई. द वैल्यू ऑफ एक्स स्टूडेंट greater than or equals to 1 or x less than or equals to -1. This condition very important. After second statement here, b can write statement cos inverse 1 upon x is equal to here also sec inverse x. Here also conditions apply. Here also statement conditions apply. X greater than or equals to 1 और यू कैन राइट x लेस देन और इक्वल्स टू -1. देखिए जो बीच में कंडीशंस आपकी होती हैं, दीज कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने कंडीशंस को ठीक से नहीं देखा तो क्या होगा कि आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे. सो दैट व्हेन एवर प्रॉपर्टी इज गिवन देन दीज कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. वैसे तो हमें मुझसे यही कहा जाता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ यही 1-2 आप लर्न कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन, मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था, दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफ्रेंसिएशन. हमें डिफ्रेंसिएशन में सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी. जैसे आपके सी प्रॉपर्टी देखिए, इसमें क्या लिखा है, tan इनवर्स x is equal to स्टूडेंट cot inverse 1 upon x and in this case x greater than 0. तो in this way you can learn some properties. अब देखिए आपको क्या लर्न करना है कि जो tan inverse x है वो आपका cot inverse 1 upon x होता है. बट यू नो स्टूडेंट क्या होता है इसमें, the value of x must be greater than 0. अब देखिए कुछ और some important properties I want to give you. अब जैसे सेकंड देखिएगा, ये कई बार बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं. जैसे आपको गिवन है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी इज पॉइंट हियर कॉस इनवर्स कॉस थीटा देन ऑल्सो थीटा. सी प्रॉपर्टी हियर tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा. मैं फिर से बता दूं, कंडीशंस अप्लाई. आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं. साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, और आपका ऐसे ही देखिएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो गया, tan इनवर्स tan थीटा हो गया. यू कैन राइट हियर सेक इनवर्स सेक थीटा. स्टूडेंट्स सेक इनवर्स सेक थीटा मींस हियर यू कैन राइट हियर थीटा. ई पार्ट हियर cosec इनवर्स cosec थीटा इज इक्वल टू थीटा. ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. एफ हियर साइन हो गया, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स
sec inverse cosec inverse and after this one more here, you know, देखिए एक आपके अभी और बची हुई है, sec inverse भी हो गया, cosec inverse, tan inverse, cot inverse left है भी, cot inverse cot theta is equal to you can write this point theta. ये प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अब देखिए होता है कि कई बार बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते हैं. ये साइन में साइन थीटा, ये क्या है? एंगल है. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस इन साइन थीटा एंड साइन इनवर्स थीटा. साइन थीटा इज ए नंबर. तो अब क्या है कि यहां पर जो डोमेन है वो साइन इनवर्स थीटा में वो क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा. ऐसे ही देखिए अगर कहीं पर ऐसे गिवन है, सपोज थर्ड प्रॉपर्टी आई एम टेलिंग यू, साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा, दिस आल्सो थीटा. If anywhere given cos inverse cos theta, then also theta, then also no problem spent. Tan inverse tan theta. Sorry, cos inverse theta. Similarly, anywhere given tan inverse theta, this also theta. Sin inverse theta theta, cos inverse theta theta, tan inverse theta theta, and spent cosec inverse theta. Cosec inverse theta, then also theta, and sec inverse theta, this also you can write here theta. अब देखिए एक आपको और बचा हुआ है cot inverse theta. इन दोनों ही प्रॉपर्टीज में कंडीशंस अप्लाई हैं. जो ऊपर है वहां पर देखिए जो डोमेन है वो रेंज है, और रेंज है डोमेन है, यही दोनों में चेंज होता है. अब इसमें भी कंडीशंस अप्लाई है, वो आप अपनी जो एनसीईआरटी है अगर आपके पास ओल्ड है तो उसमें आपको नजर आ जाएगा. अब जैसे ऐसी देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था. जैसे प्रॉपर्टी 3 देखिएगा, होता क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है लेकिन वहां पर हमें कुछ कंफ्यूजन रहता है. जैसे कि सपोज फोर्थ प्रॉपर्टी हियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग हियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स minus x is equal to minus sin inverse x. Second here, student, again I'm repeating, sin inverse minus x, it means you know student, minus sin inverse x. अगर ऐसे ही हम देखिए लिखेंगे cosec inverse minus x, it means minus cosec inverse x. One more property in फोर्थ में ही देखिए गिवन है. जैसे सबसे पहले मैंने बताया साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स. कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, इट मींस माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स. इसके बाद में थर्ड मैंने आपको बताया टेन इनवर्स माइनस एक्स. टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स. बट स्टूडेंट्स फिफ्थ प्रॉपर्टी आई एम टेलिंग यू, इसमें जो फर्स्ट है मींस एनीवे गिवन कॉस इनवर्स माइनस एक्स. यहां पर ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट. Again repeating, sin inverse minus x minus sin inverse x, cosec inverse minus x minus cosec inverse x, tan inverse minus x minus tan inverse x, no problem. But whenever cos inverse minus x given, then problem. You should write this point. This must be pi minus cos inverse x. Anyway given cot inverse minus x, then also problem. You can write here pi minus cot inverse x. और इसी में सी आपका हो जाएगा बिकॉज ये साइन इनवर्स हो गया था, कॉसेक हो गया था. अभी कौन सा बाकी है? सेक इनवर्स. यू शुड राइट ए स्टूडेंट सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल फॉर्मूलाज आर गिवन. वेल स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज आई एम टेलिंग यू. Fourth property, fifth property. Now spend property 6. Fifth property, cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. Cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x. Sec inverse minus x is equal to pi minus sec inverse x. After this sprints property 6. What is your sixth property? देखिए sixth property is here sprint. Part first. Property 6 part first. First property is here spent sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi upon 2. Second property is spent here. देखिए first property आपकी क्या है? sin inverse x
plus cos inverse x is equal to pi upon 2. And your second property is here spent tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi upon 2. And same to same, your third property is here spent sec inverse x. देखिए एक प्रॉपर्टी आपकी और है sec inverse x plus cosec inverse x is also here spent pi upon 2. अब देखिए how will you will give proof of property first. You know spent these properties are also very important. First property, sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi upon 2. Second property, tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi upon 2. Your third property is here, sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi upon 2. Proof. If you want to prove first property, you can write here spend let sin inverse x is equal to theta. It means x is equal to sin theta. If you want, you can write here cos pi upon 2 minus theta, because we know that cos 90 minus theta sin theta. You can write here cos inverse x is equal to pi upon 2 minus theta. And here you can write cos inverse x is equal to pi upon 2 minus sin inverse x. It means you can write here friends sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi upon 2. In this way you can prove first property. Consider second property if you want to prove. Then what we'll do is friend proof of second property. You can write here let tan inverse x is equal to, you can write here theta, x is equal to, you can write here tan theta, x is equal to, if you want you can write here cot pi upon 2 minus theta. This cot you can take to left hand side. Then you can write here cot inverse x is equal to pi by 2 minus theta, and you should write here cot inverse x is equal to pi by 2 minus tan inverse x. This you can take to left hand side. Then you can write here tan inverse x plus cot inverse x is equal to, you can write here pi upon 2. In this way friend you can give proof of property 6 part A, part B. Similarly part C also you can solve. Now friend come to the point. देखिए अब now property number 7. What is the seventh property? देखिए seventh property is also very easy. इस seventh property में भी ज़्यादा कुछ आपको खास नहीं करना है. जैसे कि देखिए कुछ formulas I am telling you. जैसे आपको given देखिए 7 part A. You can write here friends tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Second formula is here friend tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. फ्रेंड देखिए जब भी आपके फॉर्मूलाज हैं कंडीशंस अप्लाई है. जैसे आपको मैंने बताया tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. You should check the product of x and y. Whenever the product of x and y is less than 1, देखिए एक तो सबसे पहले क्या होना चाहिए x and y must be greater than 0. And friends one more thing here, the product of x and y must be less than 1. अगर इन दोनों का प्रोडक्ट x and y, whenever the product of x and y is more than 1, then here property change. You should write here pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Whenever you should use any property, then range is also very important. And here is friend the product of x and y must be greater than minus 1. Second property given tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. Here the value of xy must be greater than minus 1.
अब देखिए what we'll do here. If you want to give proof of part A, what we'll do here? You can write your friends. Let tan inverse x is equal to A and tan inverse by is equal to, you can write here, B. If you want to give proof of property 7 part A, let tan inverse x is equal to A. It means friend x is equal to, you should write here tan A. If tan inverse by is equal to B, it means by is equal to, you can write here tan B. Whenever tan inverse x is equal to A, it means x is equal to tan A. Tan inverse by is equal to B, it means by is equal to tan B. And you know this formula, tan A plus B is equal to tan A plus B upon 1 minus AB. This, and here you know friend, tan A plus B is equal to, sorry मैंने formula यहाँ पर wrong लिखा, you can write here friends tan A plus B is equal to, here you can write tan A plus tan B upon 1 minus, you can write here tan A into tan B. इससे पहले by mistake मैंने वहाँ पर wrong formula लिख दिया था. Means you already know friend tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan into tan B. And tan A minus B, tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. But here friend, what is the value of tan A? Tan A is x. You should write here friends tan A plus B is equal to x plus by upon 1 minus x by. After this you can write here A plus B is equal to tan inverse, क्या लिखना है देखिए, this tan you can transpose to right hand side, tan inverse x plus y upon 1 minus x by. Now you can put the value of A. A means you can write here friends tan inverse x plus tan inverse y is equal to, you can write here tan inverse x plus y upon 1 minus x by. ध्यान से देखिएगा, tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan into tan B. Tan A plus B is equal to x plus y upon 1 minus x by. A plus B is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x by. And you should write here tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x by. Similarly you can prove this friend, जैसे आपने भी पार्ट फर्स्ट को प्रूव किया है, सेम टू सेम फार्मूला, सेम टू सेम प्रूफ यू कैन गिव इन पार्ट सेकंड ऑल्सो. अब देखिए प्रॉपर्टी 8, देखिए 8 प्रॉपर्टी में क्या करना है, देखिए ये प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन में यूज होंगी. अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रेंड, दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफरेंशिएशन. ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी किसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, in case of differentiation. Now spend here property 8. In case of property 8 part A, 2 tan inverse x is equal to, you can write here sin inverse. देखिए आपके 2 tan inverse x के 3 formulas हैं. पहला दो 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 minus x square. फिर से देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, फिर से यू कैन चेक. साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x. बी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. थर्ड प्रॉपर्टी हियर 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus tan square 1 minus x square. देखिए इससे पहले मैंने यहां पर बोल दिया था sin inverse 2x upon 1 minus x square, जो कि tan inverse में आपका यूज होना था. मींस स्टूडेंट 3 formulas, 3 properties. Anywhere sin inverse 2x upon 1 plus x square given, without any hesitation you can write 2 tan inverse x. Anywhere cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square given, you can write 2 tan inverse x. In case of derivative, anywhere given tan inverse 2x upon 1 minus x square, you should write there 2 tan inverse x. No problem, without any hesitation you can write.
यही कुछ प्रूफ आपके हैं. अगर देखिए प्रूफ आप यू वांट टू गिव पार्ट ए मीन्स स्टूडेंट कंसीडर यू वांट टू गिव प्रूफ ऑफ पार्ट फर्स्ट. You can take right hand side of this question here. Right hand side what is given? Sine inverse 2x upon 1 plus x square. You should write here on putting x is equal to, you can write here tan theta. On putting x is equal to tan theta. And you should write here sine inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. And student you already know ये फॉर्मूला किसका आपका है. You already know sin 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So that you should write here sin inverse sin 2 theta. Since we know that sin inverse sin theta is equal to theta, it means you should write here 2 theta. And from here you can take the value of theta. If x is equal to tan theta, it means theta is equal to tan inverse x. And you should write here 2 tan inverse x. In this way, you can give proof of first part. Now, second part. Second part में आपको क्या proof करना है? 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square. So in part B, what we'll do here, you can take here right hand side, then you can write here cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. You can write here on putting x is equal to tan theta, you can write here cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, and this is a formula of cos 2 theta. You can write here cos inverse cos 2 theta. Since we know that cos inverse cos 2 theta is equal to 2 theta, it means this must be 2 theta. और अभी थोड़ी पहले मैंने बताया था if x is equal to tan theta, it means theta is equal to tan inverse x. It means you should write here 2 tan inverse x. This is your left hand side. Similarly, friend, if you want to give product of third part, means part C, this is a proof of, sorry, if you want to give proof of third part, यहाँ पर मैंने किसका proof दिया है? Second part. Means here friend part C. What we'll do here? You can take right hand side of part C. What is given? This is here tan inverse 2x upon 1 minus x square. अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा. On putting x is equal to tan theta, you should write here on putting x is equal to, you can write here tan theta, you should write tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, and you should write here tan inverse, this is a formula of tan 2 theta, this you can write here 2 theta, and you can write here 2 tan inverse x. In this way you can give proof of part C. तो देखिए क्या होता है कि all properties are very very important, लेकिन ये कुछ properties you should use in differentiation. Again I'm repeating, जब सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस को रिड्यूस किया था, एट दैट टाइम कंफ्यूजन था कि कितनी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें सिलेबस में नहीं है. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आई वांट टू टेल यू वन मोर टाइम, 30% सिलेबस रिड्यूस, तो प्रॉपर्टीज ऑल्सो रिड्यूस, बट आई एम टेलिंग यू you should use these properties in differentiation. Differentiation से properties अभी नहीं हटी हैं. That's why I'm telling you. These properties are important in inverse trigonometric function, no doubt. In competitive exam also important. But whenever you will solve questions related to differentiation, then direct you can use the properties whenever you will differentiate. Now come to the point, exercise here 2.2. Student here, exercise 2.2. अब देखिए क्या करना है. Means student here,
exercise 2.2 question number 1. Question number 1 is here student, prove that 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. देखिए क्या आपका क्वेश्चन है, 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. अगर आपको कभी भी ये प्रूव करना है इन दिस टाइप क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेक राइट हैंड साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेक हियर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड ऑफ दिस प्रॉब्लम इज हियर sin inverse 3x minus 4x cube. You can write here sin inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta. And you already know student, we know that sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. You can write here student sin inverse sin 3 theta. It means you should write here 3 theta. Sin inverse sin, because we know that sin inverse sin theta is equal to theta. So that sin inverse sin 3 theta given, you can write here 3 theta. Actually student, आपने क्या पुट किया था पर? यहाँ पर मैंने किया था on putting x is equal to student sin theta. जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो क्या पुट किया था, जो भी आप पुट करेंगे डिपेंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड. मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, मुझे क्या नजर आया, 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. First of all, you can take right hand side of this question. Right hand side of this question is here sin inverse 3x minus 4x cube. And after this, what is given in the left hand side? Sin inverse x. So that you can write here on putting x is equal to sin theta. Depend on left hand side. On putting x is equal to sin theta. जैसे मैंने यहाँ पर right hand side ली sin inverse 3x minus 4x cube, you can put instead of x sin theta, then sin inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta. But we know that the formula of sin 3 theta, 3 sin theta minus 4 sin cube theta, so that you can put instead of 3 sin theta minus 4 sin cube theta, sin inverse sin 3 theta. We know that the formula sin inverse sin theta is equal to theta. Therefore, you can write here the value of sin inverse sin 3 theta, 3 theta. But whenever you will take the value of theta from here, x is equal to sin theta, it means what will be the value of theta? You can take sin to left hand side. This must be sin inverse x. It means you should write here 3 sin inverse x. This is your left hand side. ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब ऐसे ही देखिए, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई ज्यादा खास नहीं है. देखिए 2 को भी अगर आप देखेंगे तो ये सब आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज एक तरीके से है. जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus, you can write here 3x. Your question is here spent 2 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. First of all, you can take here spent right hand side. Right hand side is here cos inverse 4x cube minus 3x. You can write here on putting x is equal to cos theta. Then what will do here friends? Cos inverse 4 cos cube theta minus 3 cos theta. And after this you can write here cos inverse cos 3 theta. Since we know that cos inverse cos theta is equal to theta, it means what will be the value of cos inverse cos 3 theta? This must be here 3 theta, and x is equal to cos theta. It means theta is equal to cos inverse x. You can write here cos inverse x, which is your left hand side. In this way, you can solve question number 2. These questions are very, very easy. Depend on, left hand side and right hand side by using, I am solving these questions by using trigonometric transformations. Without trigonometric transformation, you cannot solve. So that 11th class trigonometry is also very, very important for this exercise. After this, friend, question number 3.
simplify. Question number 3 here, simplify. अब देखिए इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है. What is given here? tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x. Here also spent conditions apply. The value of x cannot be 0. ये क्यों आपको कंडीशन गिवन है? Because whenever you will take x is equal to 0, ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा. So that is meant the value of x whenever this type equation given, the value of x cannot be 0. Now spend what we'll do here. Again I am telling you. यहाँ पर भी अगर हमें सिंप्लीफाई करना है, हम इसे आइडेंटिफाई करना होगा कि इन दिस ब्रैकेट इफ tan theta coming, then easily you can prove. Means then what we'll do here, you can write on putting x is equal to tan theta. Then you should write here friends tan inverse under root, you can write here 1 plus tan square theta minus 1 upon, you can write here tan theta. And you already know tan inverse under root 1 plus tan square theta, it means you should write here sec square theta minus 1 upon, you can write here tan theta. You can write here tan inverse sec theta minus 1 upon, you can write here tan theta. And after this you can write here tan inverse sec theta means 1 upon cos theta minus 1 upon, you can write here sin theta upon cos theta. And you can write here tan inverse cos theta LCM, you can write here 1 minus cos theta upon sin theta upon, you can write here cos theta. This cos theta cancelled by this cos theta. And after this friend, what is coming here? Tan inverse 1 minus cos theta upon sin theta. अभी आपको देखिए सिंप्लीफाई हुआ नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं. tan inverse 1 minus cos theta upon sin theta. You can use here half angle formulas. Means student, you want to cancel this one. Means you can put instead of cos theta 1 minus 2 sin square theta by 2. And in the denominator, you can put the value of sin theta, 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Means here student, what we'll do here? You can write here friends tan inverse 1 minus 2 sin square theta by 2 whole upon 2 sin theta by 2 into, we can write here cos theta upon 2. And you should write here tan inverse 1 minus 1 plus 2 sin square theta by 2 upon, you can write here 2 sin theta by 2 into, we can write here cos theta by 2. This one and one cancel. After this one, finally what is coming? देखिए अगर आप देख रहे हैं तो आपका यहाँ बचेगा tan inverse, you can write here 2 sin square theta by 2 upon 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. 2 cancel and this square also cancel, and you can write here tan inverse sin theta by 2 upon cos theta by 2. अब देखिए आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला पता है. देखिए sin upon cos कितना होता है? tan theta. It means you should write here spend tan inverse tan theta by 2. After this you can write here spend tan inverse tan theta upon 2, and this must be theta upon 2. It means 1 upon 2. अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या लिया था? x is equal to tan theta. It means theta is equal to tan inverse x. In this way you can simplify this question. Student, this is also very easy questions. I want to tell you these properties again, one more time telling you, these properties are very important for differentiation. If you don't know properties of inverse trigonometric function, then you cannot differentiate
you cannot differentiate inverse trigonometric function. So that, but student, one more thing I want to tell you. Whenever you want to simplify any inverse trigonometric function, then trigonometric transformation is also very, very important. You should learn the formula of sine 2 theta, cos 2 theta, cos 3 theta, sine 3 theta, tan 3 theta. If you don't know these formulas, half angle formulas, and three formulas in cos 2 theta, अब जैसे कि अगर आपको formulas पता ही नहीं है, then तो you can face problem. अब जैसे ही मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो सिंप्लीफाई करने में मैं आपको ट्रिक्स बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर हमें कभी भी सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना चाहिए. कुछ हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज से अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इजिली सिंप्लीफाई कर पाएंगे. वेल फ्रेंड्स, आई वांट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. Exercise 2.2. Friends, I am solving exercise 2.2, question number here 4 from new NCERT book. If you will check student old NCERT book, in that question number different, but in my NCERT book question number 4. What is given here student? Tan inverse under root 1 minus cos x upon 1 plus cos x. You already know student these two formulas. Cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sine square theta, and one more formula here is student, cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. Means student, you want to simplify this. You already know these two formulas. First formula 1 minus 2 sine square theta, second formula 2 cos square theta minus 1. But here only x given. It means you can use here half angle formulas. Means you can write here student tan inverse, you can write here tan inverse under root you can write here 1 minus 2 sine square x by 2 whole upon 1 plus 2 cos square x by 2 minus 1. Means anywhere plus 1 given, then too you can use this formula. Here minus given, so that you can use a 1 minus 2 sine square x by 2. After this friend, whenever you will simplify, then you can write here tan inverse under root 1 minus 1, you can open this bracket, plus 2 sine square x by 2 upon this one cancel, this one cancelled by this one. You can write here 2 cos square x by 2, 1 and 1 cancel, and you should write here tan inverse, under root you can write here sine, this 2 cancel, sine square x by 2 upon cos square x by 2. It means you can write here tan square x by 2, and you should write here tan inverse tan x by 2, and you already know formula tan inverse tan theta, that's why here x by 2. In this way you can simplify. Students, you can use half angle formulas. मैंने क्या किया, if minus given, then तो you can use formula 1 minus 2 sine square x by 2. If plus given, then you can use, you want to cancel 1, so that you can use formula 2 cos square x by 2 minus 1, 1 cancel. After this 2 also cancel, sine upon cos you already know. By using trigonometric transformations you can simplify. After this friend, come to the point, question number 5. What is here friend? Question number 5. Question number 5 here, tan inverse friend, cos x minus sin x, cos x minus sin x upon cos x plus given here sin x, this given. You want to simplify friend, tan inverse cos x minus sin x upon given here cos x plus sin x. Then what we'll do here? If you want to simplify this, here also conditions apply. The value of x must be between minus pi by 4 to 3 pi by 4. What we'll do here? You can divide numerator and denominator by cos x. Means cos x minus sin x upon cos x. In denominator also you can write here cos x plus
sin x upon, you can write here cos x. Whenever you will divide, then what will come here, friend? Tan inverse, देखिए cos upon cos, it means 1 minus sin x upon cos x whole upon 1 plus, you can write here sin x upon cos x. If you want to simplify this question number 7, you can divide numerator and denominator by cos x. Whenever you will divide numerator and denominator by cos x, then cos x cancel, then 1 will come, sin x upon cos x, and in the denominator also same to same, cos x upon cos x 1 and sin upon cos. You already know, friends, sin x upon cos x is tan x, so that you should write here, friends, tan inverse 1 minus tan x upon 1 plus, you can write here tan x. Now, friend, you can convert this into into the formula of tan a minus b. So how will you convert? Means you already know, friends, you can write here tan inverse 1. 1 means you already know the value of tan pi by 4 is 1 minus, you can write here tan x whole upon 1 plus, you can write here tan pi by 4 into, you can write here tan x. अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है. क्या कंफ्यूजन देखिए होता है, जैसे ये 1 है, मैंने यहाँ tan pi by 4 लिखा, अब यहाँ पर वो समझते हैं शायद इस 1 की जगह हम tan pi by 4 लिखेंगे. इफ यू आर डूइंग दिस, इट मीन्स यू आर रॉन्ग. मीन्स स्टूडेंट व्हाट विल डू हियर, आपको क्या करना है, इन डिनोमिनेटर 1 plus 1 into tan x यू कैन राइट. तो ये हम अगर 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है. इट मीन्स यू कैन राइट हियर 1 plus tan pi by 4 into tan x. अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, आपका फॉर्मूला था, मीन्स यू ऑलरेडी नो फ्रेंड्स, सिंस tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b equal to tan a minus b. अब देखिए यहाँ पर ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन गया. मीन्स फ्रेंड्स, tan इनवर्स you should write here tan pi by 4 minus x, and you already know, friends, since tan inverse tan theta, tan inverse tan theta is equal to theta, it means what will come here, you can write here pi by 4 minus x. After simplifying, what is coming here, pi by 4 minus x. Means, friend, this type questions are very easy if you want to simplify. बस ये क्या था कि लास्ट ईयर तक हम लोग ये कहते थे कि मतलब this type questions are not in this syllabus. अब देखिए, now question number 6 in new NCERT. I'm telling you, friend, this year new NCERT book launched by CBSE board, so that I'm using only new NCERT book. Now question number 6 here. 6 given here, friend. Tan inverse x upon under root a square minus x square, a square minus x square, you can write here on putting x is equal to a sin theta. On putting x is equal to a sin theta means you can write here tan inverse a sin theta upon under root, you can write here a square minus a square sin square theta. You can write here, friends, tan inverse a sin theta upon under root a square, you can take common 1 minus, you can write here sin square theta. After this, friend, what will come here? देखिए 1 minus sin square theta, it means cos square theta. You can write here tan inverse a sin theta upon under root, you can write here a square cos square theta. If you want, you can write here tan inverse a sin theta upon, you should write here a cos theta, a cancel, it means you can write here tan inverse tan theta. And friend, you already know this property, already yesterday explained by me to you. What will be the value of tan inverse tan theta? Tan inverse tan theta means you can write here theta. Theta means, you know, friend, you will take the value of theta from here. Check here, friend. X is equal to, देखिए ध्यान से देखिए, look at the board. X is equal to a sin theta. This implies x upon a
is equal to sine theta. It means theta is equal to, what will come here? Sine inverse x upon a. It means you can write here, student, sine inverse x upon a. Whenever you should simplify, you should take the value of theta. Whenever any value you are putting, you can take theta from there. If x is equal to a sin theta, it means x upon a is equal to sin theta and theta is equal to sin inverse x upon a. अब ऐसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7. अब देखिए 7th क्या है. देखिए दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी. दिस ईयर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वेरी वेरी इजीएस्ट चैप्टर. अब देखिए इजीएस्ट में क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इसमें तो कुछ है ही नहीं. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा. In question number 7, tan inverse, what is given here, friend? 3a square x, 3a square x minus x cube whole upon, friend, a cube minus 3a square x. पूरा क्वेश्चन चेक करिएगा. देखिए, you want to simplify here. In my NCERT book also, friend, new NCERT book. What is given? Question number 7 is given here. Tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3a x square. Sorry, this identity wrong copied by me. 3a x square. यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, 3a x square given. अब देखिए यहां पर the value of x is between minus a upon under root 3 and a upon under root 3. जो x की वैल्यू है वो किसके बीच में है? माइनस a upon root 3 and a upon under root 3. These conditions are very very important because this identity is valid only in that range only. Okay, so that you cannot neglect. यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, you can write here on putting, if you want to simplify this, on putting x is equal to a tan theta, then what will come here, friend? You can write here tan inverse 3a square into a tan theta minus a cube tan cube theta whole upon a cube minus 3a into a square. You can write here tan square theta. After this, friend, you can write here tan inverse 3a cube tan theta minus a cube tan cube theta upon, you can write here a cube minus 3a cube tan square theta. अब देखिए ध्यान से देखिएगा. I want to simplify this. I am not doing anything. You know what I am doing? Only I am putting instead of x, x is equal to a tan theta. Whenever you will put instead of x, x is equal to a tan theta, then this must be tan inverse 3a square into a tan theta minus a cube tan cube theta upon a cube, same to same, minus 3a into this x square, so it must be a square tan square theta. Now friend, you can take common in numerator a cube and you can take common in denominator also a cube. Then what will come here? You can write here tan inverse. Whenever you should take a cube common in the numerator, then you can write here 3 tan theta minus, you can write here tan cube theta whole upon a cube, you can take common here also, 1 minus, you can write here 3 tan square theta, a cube cancel, you should write here tan inverse 3 tan theta minus, you can write here tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. What will be value of this, friend? You should write here tan inverse tan 3 theta. देखिए ये आपका जो फॉर्मूला है, दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ tan 3 theta. We know that the value of tan 3 theta is 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. So that you can write instead of this tan 3 theta. And you already know the formula tan inverse tan 3 theta. It means 3 theta. And you will take the value of theta from here. Friend, don't do mistake. If you will write here x upon a is equal to tan theta, then what will be value of theta? Value of theta is here
tan inverse x upon a. You can put the value of theta here. You can write here 3 tan inverse x upon a. You can write the value of theta means 3 tan inverse x upon a. In this way you can simplify. देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस you can learn. Whenever you will learn trigonometric transformations, then you can solve this type questions easily. Otherwise, you can face problem. Now, student, question number 8. If you will solve question number 8 here, then I want to tell you, student, what is question number 8 here? Question number 8, you can check here, student. Find the values of the. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देख रहे हैं तो what is given? Question number 8 is here. tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1 upon 2. This given means student here you can use square bracket, here also square bracket. देखिए ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया गया है, इस क्वेश्चन को देने की एक what is reason behind this? Reason behind this, whenever in this book this type question given means you should use only range of principal value branch. You know principal value branch or you don't know, this board want to know. Any math teacher is giving this type question, it means that teacher want to know you are aware regarding range of principal value branch or you are not aware. अगर आप जानते हैं रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो आप सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे. मीन्स स्टूडेंट डायरेक्ट मैं पहले से बता रहा हूं, इन दिस टाइप क्वेश्चंस अगर आपका कभी भी हो देन यू कैन यूज रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदरवाइज योर आंसर विल कम रॉन्ग. हियर स्टूडेंट व्हाट इज हैपनिंग हियर, tan inverse you can write here 2, this is given here cos 2 into sin inverse 1 by 2. It means you already know pi by 6. मैंने यहाँ पर रेंज भी वैल्यू ली है. You can write here 2 3 6 and after this you can write here tan inverse. Tan inverse you can write here 2 cos pi upon 3. You already know students tan inverse 2 into the value of cos pi by 3, it means 1 upon 2, 2 cancel and you can write here tan inverse 1. tan inverse 1 means you should write here pi upon 4. देखिए अगर आपका tan inverse 1 है means pi by 4. अब देखिए ये जो वैल्यू आपकी आई है फाइनली, दिस इज बिटवीन ओपन डबल माइनस pi by 2 टू pi by 2. अगर उसमें नहीं होती तो शायद मैं कह देता कि भाई आपका ये रॉन्ग हो गया है, आप इसको चेंज करिए. नाउ स्टूडेंट कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज योर 9th क्वेश्चन गिवन? 9th क्वेश्चन हियर स्टूडेंट 10 1 upon 2. देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 1 by 2 एंड हियर व्हाट इज गिवन, साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x square plus given here cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square. Please check here, 10 1 by 2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square. Actually friend, we know that 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. Also you know student 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus y square upon, you can write here 1 plus y square. What is meaning of this? It means student you can put instead of sin inverse 2x upon 1 plus x square, here you can write 2 tan inverse x. Here also you can write 2 tan inverse y, because you know these formulas, these are formulas. Means you can write here student 10 1 upon 2, here you can write 2 tan inverse x plus 2 tan inverse, you should write here y. After this you can write here 10 1 by 2, 2 you can take common and you should write here tan inverse x plus tan inverse y, 2 cancel
and after this you can write here tan inverse. You know student, you already know the formula of tan inverse x plus tan inverse y. ये मैंने कल ही आपको फॉर्मूला बताया था. Study this formula explained by me to you. The formula of tan inverse x plus tan inverse y. It means you know ये आपका already tan था. You can write here tan inverse x plus y upon 1 minus xy. And after this you can write here direct formula x plus y upon 1 minus xy, because we know that tan inverse theta is equal to theta. ये भी मैंने कल फॉर्मूला बताया था. We know that tan inverse theta is equal to theta, so that here tan inverse x plus y upon 1 minus xy given. You can write here x plus y upon 1 minus xy. In this way you can solve question number 9th. अब देखिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10. यहीं से आपका देखिए मेन स्टार्ट हो रहा है. देखिए 10th में क्या गिवन है. ये जो बार बार मैं कह रहा हूं कि यू शुड फोकस ऑन रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 आपका है. सपोज क्वेश्चन नंबर 10 गिवन. इन क्वेश्चन नंबर 10 क्या प्रॉब्लम है. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 गिवन हियर साइन इनवर्स साइन 2/3. 10th गिवन हियर साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3. इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. मैंने आपको बताया था सिंस साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, आपको वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स साइन इनवर्स साइन 2/3. और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. इट मींस इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी. साइन इनवर्स साइन 2π/3 मींस 2 पाई अपॉन 3, बट इट इज रॉन्ग. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. बिकॉज we know that range of principal value branch of sin inverse x is close interval -π/2 to π/2. जो sin inverse x है उसका जो रेंज है -π/2 to π/2. और मैं अगर डायरेक्ट वैल्यू ले रहा हूं that value does not belong to this range. Therefore if direct you will write then that will be wrong. It means student what we'll do here, you should write here sine inverse sine 2π/3. It means pi minus you can write here pi upon 3. Whenever you simplify this then this will come. And you already know sine 180 minus theta, it means sine theta. You should write here sine inverse sine pi upon 3. और आपको ऑलरेडी देखिए ये फॉर्मूला पता है. देन डायरेक्ट व्हाट इज कमिंग हियर पाई अपॉन 3. ये आपका आंसर इसलिए करेक्ट है बिकॉज दिस बिलोंग्स टू रेंज -π/2 to π/2 एंड दिस इंटरवल मस्ट बी क्लोज्ड. देखिए कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आप ये 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में होगा, आप तो सोचेंगे आपके पूरे मार्क्स आ रहे हैं, बट आप रेंज का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा. आप तो डायरेक्ट 2π/3 समझ लोगे. एमसीक्यू क्वेश्चंस हो या अदर टाइप क्वेश्चंस होंगे तो आपके मार्क्स तो वहां पर इतने नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप वहां पर ध्यान से देख नहीं रहे. ऐसे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है. क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज गिवन हियर tan इनवर्स यू शुड राइट हियर tan 11 पाई अपॉन 4. ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स 3π/4. अब देखिए 3 पाई अपॉन 4. सिंस वी नो दैट tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा. तो होगा क्या देखिए अगर आप डायरेक्ट इसमें लिखोगे हियर आल्सो सेम टू सेम प्रॉब्लम कमिंग बिकॉज वी नो दैट रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन इज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. ये देखिए इसकी रेंज है एंड दिस इज ओनली ओपन इंटरवल. अब ये इसमें डायरेक्ट अगर मैंने लिख दिया 3π/4 तो इस रेंज में नहीं आ रहा है. अगर आपने ऐसा किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. बट 3π/4 अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस देन व्हाट विल कम हियर tan inverse 10 you can write here pi minus pi upon 4. Then no problem. After simplifying this coming here 3π/4 and you know that tan 180 minus theta कितना होता है. Students, tan inverse 10 π/4 ये किसका हो जाएगा माइनस का होता है. ध्यान रखिएगा tan 180 minus theta means minus tan theta and you can write one more step here tan inverse 10
minus pi upon 4. It means you should write here student minus pi upon 4. अब ये देखिए जो आपका आया है minus pi by 4. Minus pi by 4 belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2. It means you know this is correct. अगर आपने डायरेक्ट किया तो फिर से वही बात हो जाएगी, आप कहोगे कि सर हमारे मार्क्स नहीं आए. मार्क्स कैसे आ जाएंगे? बिकॉज रेंज यू आर टेकिंग रॉन्ग. तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12 हियर? देखिए 12 क्वेश्चन में क्या है, 10. देखिए इन क्वेश्चन नंबर 12 10 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2. अब देखिए ये आपको क्या करना है, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन इनवर्स 3/5 एंड व्हाट इज गिवन हियर, कॉट इनवर्स 3/2. अब आपको क्या करना है, यू कैन यूज हियर कन्वर्जन फॉर्मूला. कन्वर्जन फॉर्मूला मीन्स स्टूडेंट, जैसे सपोज you should write here let sin inverse 3/5 is equal to theta, therefore sin theta is equal to 3/5. You can draw a triangle, then you should write here theta, this you can write here 3 and this 5, और ये कितना हो जाएगा by using Pythagoras theorem 4. It means students the value of tan theta is equal to 3/4. Whenever you will simplify, theta is equal to tan inverse 3/4 by using conversion formula. ये शायद सबसे easiest है. वैसे तो हमें फॉर्मूलाज लगा करना चाहिए था, लेकिन ये easiest था इसलिए कर दिया. अब देखिए ये थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 3/5, और यहां पर थीटा कितना आ रहा है आफ्टर कन्वर्टिंग इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स 3/4. तो आप क्या कर सकते हैं, दिस एंड दिस यू कैन चेक. इट मीन्स स्टूडेंट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. ऐसे ही देखिए यहां पर ये जो आपका है कॉट इनवर्स 3/2, अगर आप इसमें कन्वर्जन फार्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स 1/3/2 रेसिप्रोकल फार्मूला यूज हो जाता है. इट मीन्स tan इनवर्स यू कैन राइट हियर 2/3. मतलब ये मीन्स स्टूडेंट साइन इनवर्स 3/5 बाय यूजिंग कन्वर्जन फार्मूला tan इनवर्स 3/4 एंड कॉट इनवर्स 3/2 बाय यूजिंग कन्वर्जन फार्मूला tan इनवर्स 2/3. एंड इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, देन व्हाट विल डू हियर, you can write here 10. Now instead of sin inverse 3/5 you can write here tan inverse 3/4, और ये जो आपका cot inverse 3/2 है you can put here tan inverse 2/3. After this you already know student this formula, tan inverse A plus tan inverse B is equal to, you know very well student, A plus B upon 1 minus AB. It means you should write here 10 and you can write here tan inverse A plus tan inverse B. It means you can write here tan inverse 3/4 plus 2/3 upon 1 minus 3/4 into 2/3. This you can write. You can simplify this. After simplifying, what is coming here, 10 inverse, you can take here LCM. LCM is here 12, 9 plus 8, and in the denominator 12 minus 6 upon, you can write here 12. It means this 12 cancel, and you can write here 10 inverse, you can write here 17/6. It means after solving you can write here 17/6. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. कुछ भी नहीं किया इसमें, केवल इस साइन इनवर्स 3/5 को, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है यू कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स. ये जो आपका cot इनवर्स 3/2 है यू कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, एंड आफ्टर दिस यू कैन यूज दिस फार्मूला आफ्टर कन्वर्टिंग tan इनवर्स A plus tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स A plus B अपॉन 1 minus AB. अब ऐसे ही देखिए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हियर स्टूडेंट. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13?
Question number 13 here spent. This also very easy. Question number 13 is spent here. Means cos inverse cos 7 pi by 6, cos inverse cos 7 pi upon 6. यहां पर मैंने आपको देखिए फॉर्मूला बताया था, सिंस वी नो दैट cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा. अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग. डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करोगे आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स फंक्शन इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई. जो cos इनवर्स है उसकी रेंज आपकी होती है 0 to पाई. लेकिन यहां पर अगर मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया, ये हो जाएगा 7 पाई अपॉन 6, जो कि इस रेंज में नहीं आ रहा है. इसका मतलब क्या है, यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू कैन फाइंड, मीन्स यू कैन राइट हियर cos इनवर्स, you can write here cos pi plus pi upon 6, and whenever you simplify this you can write here cos inverse cos 180 plus theta. It means to spend cos pi upon 6. ध्यान से देखिएगा ये किसका हो जाएगा. देखिए cos pi plus pi by 6, तो 6 pi plus pi. अब देखिए यहां पर कौन सा आएगा, ये here साइन कमिंग है नेगेटिव. कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव. अब माइनस कॉस पाई बाई 6 है, तो आपको देखिए कितना लिखना पड़ेगा. यू कैन राइट हियर कॉस इनवर्स, देखिए कॉस 180 प्लस थीटा आपको होता है माइनस कॉस थीटा. अब यहां पर माइनस कॉस है, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 6, बिकॉज कॉस 180 माइनस थीटा इट ऑल्सो स्पेंड हियर, यू नो, माइनस कॉस पाई बाई 6. इट मीन्स यू कैन राइट हियर कॉस इनवर्स, यू नो, कॉस पाई अपॉन 6. अगर आपने सॉल्व किया, यहां पर सॉल्व डायरेक्ट कर लीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6. एंड नाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. दिस इज कमिंग हियर 5 पाई अपॉन 6. दिस बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0, पाई. देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई नो इट, आई एम रिपीटिंग. डायरेक्ट मत रखिएगा, बाय यूजिंग बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ भी हो जाए आपको cos इनवर्स फंक्शन को इस रेंज में लेकर आना है 0 to पाई. इन दिस वे यू कैन सॉल्व. नाउ स्टूडेंट, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज जरूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ inverse trigonometric function. Thank you.